Hi guys, this is Mac here, and I welcome you all to my YouTube channel, which is called Mac Vlogs. So, as you know, that I have got down my great friend and a Pakistan's famous celebrity. His name is Alisafina. Well, we're going to be talking about his journey from being an engineering student and how he turned his dreams got down to a reality of becoming a famous actor in Pakistan. कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम अली सफीना साहब, कैसे हैं आप? Walaikum assalam, Mac. Thank you very much for having me on your show. And the last week, I think last week or so, 10 days ago, in fact, you got in touch with me regarding this session. So I was really excited to be on this session. Firstly, because you're from Muscat, I'm from Muscat. I think you're from Pakistan. Are you from Pakistan? Well, I was only born in Karachi, but I was hardly 40 days before my mom took back me to Oman because my family and my parents, they were in Oman for the last 40 years, mashallah. Oh, wow. So, Wow. So there you go. So that's another sort of connection between me and you. Even my family has been there for the last like 40 years now. But that being said, thank you very much for such a warm welcome. Thank you. it's an I, honor to have you, I definitely. hope I can answer all your questions. Definitely. You're in a hot seat, but make that seat a little warm. It's no issues at all. So we'll be cool chat, like between two buddies, I would say. So why don't you go ahead and give a little small intro about yourself, before we proceed with the questions and answers. That who is Ali Safina and how did he move to Oman and in which year was that and how did his whole life turned around after moving to Pakistan? So please go ahead. Well, to start off with, I'm a Pakistani actor and Hmm. radio broadcaster. Um, who's been in the showbiz for the last 13 years now. But prior Wow. to joining my showbiz, side, um, or you can say, prior to joining the radio, Uh-huh. formerly, I was an engineering student, and I started off studying for mechanical engineering in Oman in a Mhm. college called Caledonian College of Engineering. And Very prior to famous. that, I was in Pakistan School Muscat, Hmm. which is the biggest school in Oman True, uh, true. for Pakistanis. So I started off. I joined Pakistan School Muscat. I think maybe in 19. Um, 88 maybe. What was Yeah, your age? What was your age? 5 years old. I think 4.5, 5 years old. So, So from early childhood till all the way till high school, you finished Pakistan school. Am I oh yeah, right? straight out, Okay. straight away. Straight. Yeah, I was Wonderful. there till my 12th standard, and as soon as I finished my 12th, um, I sort of gave my exams for the Caledonian College, and then at that point, the Caledonian College used to be the place to be, and I luckily got myself an admission in mechanical engineering faculty. Stayed there for my bachelor's, and then moved on for my honors to Scotland. the Glasgow Caledonian. Yes, the main campus, the Glasgow Caledonian. But as soon as I finished my engineering over there, I wanted to like sort of explore my own sort of talents. My friends always used to tell me that, Safina, you're a good singer, or you can perform on stage, or you can entertain people. So I was like, yeah, sure, I can do that, and I like to do that. So during my engineering time, when I was in Glasgow, there was this gentleman called Ali Malik and Javed Sattar. These two gentlemen. These guys were Okay. running Asian radio station in Glasgow, the only Asian radio station, Okay. which is called Avaz FM. So Hmm. one of my friends, whose name is Shandy Kambo, Shandy is a big time DJ over there. Big, huge event promoter in Glasgow and all. So one of my very good friends. Okay. Um, he was the One. one who was like, Safina, why don't you start, hosting and all that? I'm like, yeah, I'd love to do that, but I don't really know how to host or how to talk. So Shandy was like, okay, don't worry, chal aaja mere naal, main tenu le ke chalna. So I, Okay. yeah, because he's a very warm guy. And then there was another guy called Rakesh Baga, Hmm. aka Rocky.
So my friend Rocky, he was a DJ as well. Shandy was a DJ as well, and a couple of other guys as well from the uni. These guys were DJs. So I start to, sort of pick up, different, like the way they used to dress and the way they used to talk, and the way you pick up things from your friends. इसका And मतलब है इसका मतलब है कि इंजीनियरिंग आपने अपनी पसंद से नहीं की, आपने अपने माँ-बाप के कहने पे की. इंजीनियरिंग वाज़ नॉट नेवर योर पैशन, आई गेस, इन अ सब्जेक्ट इन स्कूल? Not at all. I don't think so कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऐसी कोई वो है स्टडी है कि आप जबरदस्ती कर सको. आप जबरदस्ती इंजीनियरिंग की किसी भी फील्ड में नहीं हो सकते. So you Okay. have to give in your hours, your dedication, and your hard work, into the modules that you're going to be studying. I agree. That being said, मैं क्योंकि जरा थोड़ा सा, I don't know, for some reason I was drifting away from the academics Okay. side, and I sort of realized कि यार okay चलो अगर मैं एक साल अपना जिंदगी का waste भी कर देता हूँ, say, Okay. so there's no harm. At least I'm going to explore myself. So I agree. I sort of again took the safest route, which was talking to my parents, and I talked to my parents that I want to join a academy where I could get formal education in maybe singing or dancing or performing or whatever. So I found out about the National Academy of Performing Arts in Karachi. Straight away, booked my ticket from Muscat to Karachi, came to Karachi, went to National Academy of Performing Arts, gave my audition, luckily got a seat over there. So I was a part Okay. of the third batch, जिसके अंदर there were other stars, जो कि आपके stars हैं, like Mohsin Abbas Haider. Okay. Some of my famous, batchmates are like people like Paris Masroor, Nabil Qureshi, Saqib Khan. Some Okay. of them are senior to me. Some of them are, यानी हम साथ के हैं. तो बस चल सो चल. I was always on the go, always on the go, always looking out for So opportunities. let my followers know that you are a DJ, VJ, host for television and radio, and you're an actor. So all these four professions which you have tried out, which one is the most passionable for you, and which one you do pursue for the future in terms of I think enjoying, not I enjoying? think I've enjoyed every single day of my life ever since I've started doing all this. Okay. It was late 2005, 2005 or 2006 where I had sort of made up my mind where I was like, okay, I want to go ahead in life and I want to follow what my heart says and not what my brain is telling me. Okay, go to a 9 to 5 job, make this much amount of money, get this car. So for me, that sounded too sort of cliched, especially if you compare it to the Muscat lifestyle. So it Yeah. was like I had seen my father do that. I had seen, other Everyone family, do everyone doing the same thing. So I was like, anything. yeah, I have to break this monotony just for my own sake, not for anyone else. And luckily I had, supportive parents. These guys were like, yeah, sure, do whatever you want to do. So even mechanical engineering was my choice. Although these guys were saying, pick some easy subject or whatever. Mm, But that sort of opened up the way for me to mashallah. explore different avenues of creativity and different avenues of showing myself Hmm. to the world, sharing my experiences, or the kind of insight Okay. people want. So I started doing that, and radio sort of helped me first in learning In as to connecting, in connecting with the people and the audience and stuff, right? pretty much, because when I moved to Pakistan, I didn't know no one. I didn't have no one from showbiz specifically. Who was Huge already industry, I would say. It's a guide huge. me. Yeah. Yeah. So I went and gave auditions and everywhere pretty much. Even for my first big drama break, I had given an audition, and it wasn't through anyone's recommendation, by the way. Mashallah. Uh, Yeah, the chair's up to you for that. yeah, man. So really, really happy about that. So I'm really happy, and I feel really blessed that, Alhamdulillah, I'm living the dream, of so many other people. You're living Uh, your dream. I'm living my dream as well. So it's
it's great. It's been great so far. mashallah. You know, the perfect thing about you is that the exact perfect timing of your comedy, which I really enjoy. You really hit the nail really easily. You know, I don't know. I'm not a comedian, but when I watch comedy, you know, Neither am I, bro. I am the most serious person anyone can meet. Like generally very. वो कहते हैं ना कि आप guy, you know, I feel that you're a very simple guy to be connected yeah, with easily. totally, totally. I mean, आपका experience कैसा है मेरे साथ? Like you messaged me at one platform, I didn't read it over there. कुछ 3-4 दिन बाद मुझे मौका मिला, so I replied. So it was a very simple, sort of a process. I agree. No managers or no nothing, no You know, managers. basically because your voice changes with the script. I have seen that whatever the dramas and the movie you have done, I think you have done one movie, right? The I've done Jalebi. 2 films. I've done Jalebi. I've done Kuch Kar Guzar, which was Pakistan's first ever movie. Correct. Uh, interactive thing. You know what's an interactive movie? Yeah, So yeah, basically, yeah. interactive movie. For all those people, जिनको नहीं पता, interactive movies will allow you to pick the path of your protagonist after Mm-hmm. every chapter. So you Okay. would actually decide the path of your protagonist in Okay. the movie. So Okay. we made that in 2016. It's still on YouTube. It's got a couple of million views, so we're happy with that. But yeah, um, two Did movies and a did couple of did, did video. Alisafina ever got offer from Bollywood yet or not yet? No, but some of the people like who were sort of wanting to hire actors from Pakistan, like some Mm-hmm. talent, Mm-hmm. they had gotten in touch with me. I don't know किस project के लिए कौन सी film क्या. They had gotten in touch for auditions and all, and I did give record a few auditions and send it to them. But अभी तक कोई ऐसी कोई breakthrough नहीं हुई. It doesn't matter. You're a product of Pakistan and you're doing wonderful job for Pakistan. So basically, because our flag is rising high with people like you who are doing wonderful job, I would say. So Thank even you. if you don't, whatever the relations between Pakistan and India is at the moment, basically because our talented people are going there, okay. But if they're not going there, it doesn't mean that our industry is still working, right? And we have a lot of talent to be promoted like you. Absolutely. I mean, in Pakistan, if you were in Pakistan and if you, or if you are like a regular viewer of Pakistani dramas or Pakistani television, you'd notice I there. never used to, I will be very frank. I never used to watch Pakistani dramas much when my people, my friends, and all used to tell me. But then I avoided a bit, basically because the content was always about negative. I wouldn't mention that like talaq and you know this ka rishta uske saath. I feel that these type of topics really spoil I the know. culture of the family. Yeah, Yeah. I know what you mean. Yeah, exactly. Mm. So I mean, but now the next thing is web series and producing stuff for Netflix. Hopefully, will reach there. We've got some of Pakistani productions now Mhm. on international platforms such as uh, Z5, and then Mhm. there's Amazon Prime. One of my friends, he's got his own talk show, something similar to what you're doing on Amazon Prime. So Okay. people are actually reaching out to the world, to the global audiences as well. So That's I'm looking forward to that, and I think our talent and our people in Pakistan, they're well equipped. It's just a matter of time. My friend, he is staying in New York in US. He just came down to Pakistan and he is thinking to make some movies in Pakistan. So he is looking for a producer to direct his script, which he has a wonderful script. So I think you would be the ideal person for him if I can connect you with him. And it's wonderful to Who work on knows? different platforms. Who knows? Who No, knows? amazing actually, basically because see the thing, I lived all my life outside Pakistan. It's just been 1.5 years I moved to Pakistan, and now I feel that I should be contributing the positivity and the the best part about Pakistan as the positive image, through my live sessions, which I've been conducting for the last 2 months now, 2.5 months. That because as I have traveled around, I always used to feel that Pakistan is being promoted in a negative way, like whether I was in US or any other country. So I feel that it's a responsibility of
all Pakistanis out there to promote Pakistan in a positive Yeah, way. In whatever the absolutely. industries, whatever the professions, whatever the talent and skills they have, they should promote because we all are the ambassadors of Pakistan. Do you agree with that? Absolutely. Absolutely. And it will be my honor once again. I am not in a showbiz industry, but it's after moving here, I feel that after watching you now live with me, that maybe we can collaborate and do something together to promote Pakistan in a different way. It's all up to you, how the collaborations can be. Absolutely, absolutely. I mean, in the past 13 to 14 years of my career, I've worked with numerous people, musicians who wanted to release their songs, release their videos, Hmm. people who wanted to act, people who wanted to write, people who wanted to direct. All I've come across all sorts of people, Do you and have your own production house? Do you have your own production house? No, right? yeah, Or not yet. you? Okay. Oh, so you work under different banners. Absolutely. Uh, Okay. so what happens is Yeah. usually all the people, like for example, there are a couple of production houses in Karachi, ठीक है, जो कि main major films भी produce कर रहे हैं, dramas भी produce कर रहे हैं. Okay. So they are people who call up actors and actresses and directors and script writers and all that. So वो उन्होंने कुछ सोचा होता है अपने दिमाग में कि Mm-hmm. यार मैं सोच रहा हूँ मुझे ये कास्ट मेंबर्स चाहिए, ये स्टोरी है मेरे पास, तो वो आहिस्ता आहिस्ता बंदा जुड़ता जाता है एंड yeah, things start to roll that way. Yeah, Do you know about Plan B Productions? Do you know absolutely. about them? Yeah, yeah, You know Dr. Yasser? absolutely. Yasser and यासिर भी मस्कत का है. यासिर और हम लोग इकट्ठे रहते थे एंड आई थिंक बहुत हम लोग तो हैंग आउट बड़ा करते थे बिकॉज एट वन पॉइंट he used to be in Pakistan school as well. Maybe Yes. before moving to Before you move further, before you proceed further, let me add and share this with you as well. Yasser and I are childhood friends as well from American school before right, we moved to Pakistan school. So right, we are been together since the age of 6 years old. You know, absolutely, so absolutely. mashallah, he's the first guy when I moved to Pakistan 1.5 years ago. Came to his office and I just sat with him and I just never felt that I'm meeting a guy after 25 years or maybe Exactly. 20. Yeah, So yeah. he's so warm, he's really What, nice, and I keep on what a, tapping on him. yeah, yeah. What a great guy. You Zabardast know, आदमी. but what happened was it's just between you and me that I asked him to connect me to Alisafina. He said, "Okay, let's see." He's busy, but he never connected me with you. I had to Maybe find you to get connected with you, mashallah. see this is the way. I mean, लोग बहुत बिजी हो सकते हैं, और अक्सर इसमें हो जाती है गलत फहमियां हो जाती हैं कि यार मैं फलाने से नहीं मैंने उसे कहा था कुछ करने के लिए तो वो नहीं मिला और आई थिंक अब I तो move on. I move on. I'm not keeping any grudges. I don't keep grudges, mashallah. तो आपके हाथ में है सब कुछ अब लाइक Bilkul. literally you can talk to the president of United States of America from your room. How True. easy is that, yeah? You can tag POTUS to just read whatever you want to say, provided आपकी बात सही होनी चाहिए यार. वो Bilkul. तो Bilkul. बात तभी तो. So I mean आजकल तो किसी तक पहुंचना मुश्किल बात है ही नहीं ना. Because it's a tip of right. Everything is on the phone. You can just catch them anytime. WhatsApp, social media is booming like nothing because the young kids are more aware than us. What to be done and how to be done. TikTok, mention any platforms. Yeah, Everyone is doing different jobs and stuff. yeah. So can we hear a small dialogue from you from Suno Chanda's Dorji style? Oh wow. Oh. uh, I really enjoy your character for that. That's why I'm saying that. My excuse me for that. sure. यार उसका कोई डायलॉग एक्चुअली it's such a मतलब वो जो आपने कुम्पी के साथ या इकरा अजीज और फरहान के साथ कोई इंटरेक्शन में बात की हो या वो इस तरह अब मुझे डायलॉग तो कोई नहीं याद आ रहा बिकॉज मैं आजकल वो मैं आवाज सुनना चाह रहा हूँ वो जो आवाज थी आपकी वो थोड़ी भारी वाली हो हंसने वाली इन दैट स्टाइल एक्चुअली द थिंग इज कि कभी कोई कैरेक्टर होता है ना मैं यूजुअली क्या करता हूँ एक टाइम पे एक ही कैरेक्टर करता हूँ और ओके अगर मैं वो कर रहा हूँ आई ट्राई टू फोकस ऑन दैट
उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसका एक ख्याल उस चीज के अंदर, कला भी उसका फिर मेरा साथ देता है। ठीक है, ठीक है। आजकल जो मैं ड्रामा शूट कर रहा हूँ उसमें आई एम प्लेइंग अ वडेरा, ठीक है, और वो भी वडेरा है। छोटी मोटी मुच्छें, वही वाला ना जो अभी तुमने तस्वीर भी डाली हुई थी माशाल्लाह। पाकिस्तान में एक लोग है ना, वडेरों की एक खास लोग है, और लिटरली मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। कोई 3 दिन पहले मैं शूट से वापस आ रहा था और निकलने लगा तो मेरे गेटअप आर्टिस्ट ने कहा कि भाई ये मुझे आप लगा के जा रहे हो, उतार लें, लोग घबराएंगे। तो नहीं, कोई कह रहा है मैंने घर जाना है और घर जाके मैं कर लूंगा आराम से, मुझे जल्दी है। मैं गाड़ी में बैठा हुआ घर जा रहा हूँ और बीच में मुझे मेरी वाइफ की कॉल आती है, के listen up, just grab something on the way फलानी जगह से। So I was like, okay, it's on the way, I'll just grab this and I'll come। तो मैं अब जिस जगह गया उधर मैं तकरीबन लाइक अ रेगुलर, ठीक है, और मैं गया, गाड़ी का हॉर्न बजाया और बंदा यूं भागता हुआ आ गया, और वो मेरे पास जब आया पहचान लिया होगा, उसने पहचान लिया होगा। नहीं, उससे नहीं पहचाना। अच्छा। एक सेकंड के लिए उसने मुझे यूं नजरें उठा के भी नहीं देखा, मैं इतना खौफनाक लग रहा था। अल्लाह माफ करे। हाँ, मेरे मुंह पे मेरे हुलिया मेरा इस तरह का था कि वो आके वो यूं खड़ा हो गया जैसे किसी दरबार में कोई बादशाह खड़ा होता है। तो उससे मुझे ये एकदम रियलाइज हुआ कि यार हमारे मुल्क के अंदर, और वाकई ड्रामा जो है वो सही अक्कासी करता है, हमारे मुल्क की तर्जुमानी करता है, it picks up characters from the normal life, ठीक है। and if we talk about सिंध में है वडेरे, में आप जाएं तो उधर के अपने चौधरीज एंड फलाना फलाना जो लोग हैं जो कि इन पावर है और जुल्म वगैरह करते हैं लोगों के साथ। पाकिस्तान में जाएं तो सरदार हैं, तो और मुझे बड़ा वो लगा। अच्छा, उसने 2 मिनट के लिए ना वो यूं खड़ा हो गया और उसने कहा जी अदा, तो ये हाथ रखा हो। एक तो वैसे ही सिंध में एक है बड़ा ख्याल करते हैं ना, बड़े हॉस्पिटल है ना, तो वो यूं हाथ रख के जी अदा, मगर मैं उसे कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मेरी तरफ देख, तो आवाज बदल के ना मैं तो नहीं। तो उसने देखा तो मैंने उसमें कहा, मैंने कहा ओए नकली मूछें लगाई हुई है। तो वो देख के डर गया ना, पेरेंट्स को देख के डर गया होगा। तो यार मैं देख रहा हूँ भाई गाड़ी आपकी है मगर बंदा अंदर जो है ना बिल्कुल अलग बैठा। हेल्प करते हैं मुझे। छोटे छोटे डायलॉग की अगर हम बात करें तो वो मेरे लिए 2-3 बातें उसकी मुझे याद है। जैसे वो जो जी कहता था, जो जी की बेइज्जती अगर हो जाए ना तो उसने कहना होता था, होल्ड योर कंट्रोल ऑय। तो तो या बट अल्लाह का शुक्र है यार, ये पता नहीं क्या हो जाता है इस तरह, अगर मैं कैमरा के सामने ना हूं मेरे लिए करना बहुत मुश्किल होता है। एकदम कैमरा सामने आता है और how does Alisafina avoid the crowd when he goes out? जैसे आप अभी कह रहे हो कि अभी आप सिर्फ ऑन द वे कुछ लेते हुए घर ही जा रहे थे, तो बिकॉज यू वर इन अ ड्रेस अप ऑफ अ कैरेक्टर, लेकिन अगर आप कैरेक्टर में नहीं हो तो बाहर निकलना अली सफीना के लिए कितना मुश्किल है? आई एम फ्रेंडली मैन, मैं इतना फ्रेंडली आदमी हूँ। मैं जिस जगह पे रह रहा हूँ, इनफैक्ट पाकिस्तान थ्रू आउट कहीं भी जाता हूँ, मैं ये तो नहीं होता मेरे कि मैं अपने साथ 4 गार्ड्स लेके फिरूं खाम खा। नहीं नहीं, लेकिन अक्सर ये होता है ना कि एक्टर्स, जैसे मैं हूँ माशाल्लाह, मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, तो मैं लोगों को जब पहचानता हूँ, वेदर दे आर सेलिब्रिटीज और एनी फील्ड के हों जिनको आप देखते हो न्यूज़पेपर में, जिनकी न्यूज़ आती है, और तो यू मेक इट आउट दैट दिस पर्सन इज फला फला एंड उसका नाम क्या है, और सो यू गो एंड गिव देम द रिस्पेक्ट। पता है दिखावे पे नहीं जाना चाहिए। कुछ ऐसे लोग, I'm not talking about दिखावा, I mean that when you go to the people and you give them that respect for what they're doing, उस टर्म्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन कुछ लोग बहुत वायलेंट भी हो जाए, ओ यार वो सेलिब्रिटी उसके पास जाओ, जिस तरह बहुत सारी क्राउड करती है सेल्फी लेने के लिए। मैं आपको बताता हूँ, जब हमारी फिल्म की प्रमोशन थी तो उस टाइम पे ये था कि सुबह दोपहर शाम फिल्म की प्रमोशन चल रही थी, ठीक है। हम लोग अगर कहीं भी जा रहे थे तो हमारा पूरा क्रू आगे पीछे पुलिस प्रोटोकॉल में जाता था, और हमने उतरना भी होता था तो मैं उस टाइम पे बोल रहा होता था कि यार ये जाने दो,
ये मैंने पेप्सी लेनी है मिसाल के तौर पे, I just need a can of Pepsi, and they'll be like, no, you're supposed to sit over here, don't go anywhere, wait, I we see. provide you that. अच्छा, इतने में लोग सामने से आ रहे हैं तो they're like, no need to meet them, no need to say anything, you're a star, you don't need to. So I'm like, man, hold up. जो लोग मुझे मोहब्बत देते हैं, जो लोग माशाल्लाह। मुझे प्यार करते हैं, मैं उनको तो नहीं वेट करवाऊंगा, मैं तो जाके मिलूंगा, मुझे ना बिल्कुल। उल्टे सिखाए। तो मैंने अपने आप को बनाया ही ऐसा है कि अल्लाह पाक ने मुझे बनाया और फिर उसको अपने आप को संभाल रहा हूँ मैं ऐसे कि मुझे कोई ऐसी चीज जो है वो खराब ना करे। I वरना got it. लोगों ने मशवरे दिए कि यार 2 गार्ड रखो, मैनेजर रखो, फलाना बंदा रखो, तुम क्यों अपनी चीजें खुद उठा रहे होते हो, तुम फलानी क्यों नहीं करते। जैसे माशाल्लाह, जैसे यू आर सिंपल, इफ यू कीप योर लाइफ सिंपल, एवरीवन बिकम्स सो इजी, मतलब सबके लिए आसान हो जाता है कनेक्ट करना ना, चाहे आपके फैंस हो, फॉलोअर्स हो। अगर आप थोड़ा सा एरोगेंट हो जाओ एक्टिंग में या जिस फील्ड के भी हो, आई वुड से कि तो फिर अल्लाह फिर आपको फिर आप वक्त दिखाता है, बुरा वक्त जरूर दिखाएगा फिर आपको। बात बताऊं क्या है, वो तो बात आपकी सही है, लेकिन कभी कभार हमें होना भी पड़ जाता है, ठीक है ना, जिधर एक 6,000 बंदे का क्राउड है and you're hosting or doing something and people are not, sort of, कहाँ हजारों की क्राउड में आप किसी को संभाल सकते हो, ये you भी है, दैट्स ट्रू, know? वेरी ट्रू। You know, it just depends from situation to situation. But generally, I'm a very easygoing, friendly. आई नो, अगर आप इतने आसान इजी नहीं होते तो मुझ जैसा बंदा आपसे कनेक्ट भी नहीं कर पाता। अगर मैंने आपको एक स्क्रिप्ट बताई होती तो आप उसके तहत चलते। फॉर एग्जांपल, जैसे मुझे कनेक्ट करने के लिए मैंने कहा कि लेट मी बी सिंपल, आई नो इफ ही Ali Safina has to connect with me, he will definitely connect with me, then Allah will help me in that, and which alhamdulillah it happened. So इसलिए be simple like who I am, and I prefer like that way for everyone, आसान है जिंदगी। Hello, तो Zindagi. Yeah. बेशक। तो अली सफीना क्या कह रहे हैं दुनिया को कि उनके आने वाले कौन से ड्रामे हैं? आई नो यू विल बी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एंड द क्लॉजेस व्हिच नॉट टू मेंशन अबाउट इट, बट No, we could mention something. ड्रामे या मूवीज अपकमिंग क्या हैं जिससे वी ऑल कैन लुक फॉरवर्ड टू? So, upcoming, फिलहाल 2 ड्रामास हैं और दोनों नेटवर्क पे आएंगे, हम टीवी पे। ओके। एक चुपके चुपके, मजेदार किस्म, most probably चुपके चुपके. So you guys will see that maybe in 2021, Ramzan time के करीब. So hint, it's going to replace Suno Chanda. दूसरा, Oh, I love Suno Chanda. I wish I thought the season 3 is coming in that next year. So, क्या पता, we don't know about Suno Chanda yet. okay, लेकिन fine. that's going to replace that. And there's another project called Qarar, जिसकी Okay. आजकल चल रही है, and वो एक बड़ा जबरदस्त अच्छी कहानी है उसकी। I'm playing a वडेरा, मगर मॉडर्न वडेरा है, इतना कोई उस टाइप का नहीं है जो एक लड़की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है, उस टाइप का उसकी स्टोरी है। तो ये 2 ड्रामास हैं जो कि आप जल्द देखेंगे। अली सफीना किसी ब्रांड, किसी प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं? Absolutely, बहुत सारे, like over these years तो बहुत सारे ब्रांड्स के साथ किया है। You are connected with different brands and all. So let me know what those brands are so I can go and pick them up, basically because my friend is the ambassador for that. Sure, I think that it's going to work. Surely it's going to work. डेफिनेटली, बेसिकली यही होता है कि जो भी फेमस सेलिब्रिटी होता है वो किसी भी ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करे या ब्रांड एम्बेसडर बने, तो जो ऑडियंस और फॉलोअर्स होते हैं ना, वो उनको वही ब्रांड खरीदना होता है भाई। जैसे फॉर एग्जांपल सलमान खान ने अगर थम्स अप पी ली तो हमने भी थम्स अप पीनी है, तो अगर अली सफीना ने अगर सैमसंग लिया तो मैं भी जाके सैमसंग लूँ, वो वाला एक तौर तरीका तो होता है बेसिकली, बिल्कुल बिकॉज होता है। trend, you set the examples for the people like us to follow. I would say that. I think कि ये बिल्कुल जो देखिए, अब पब्लिक और भी ज्यादा स्मार्ट हो गई है मेरा ख्याल है, और भी ज्यादा what do you call it, well aware हो गए हैं लोग। Well ठीक, aware, well aware. That's अब true. लोगों को ये जो है ना, ये परहैप्स मुझे 90s की एक थॉट लगती है, जो आप कह रहे हैं ना कि अच्छे सलमान खान को हमने देखा थम्स अप पीते हुए, तो हमने भी थम्स अप, हमने ढूंढी जाके कि थम्स अप है कहाँ है, थम्स अप यहाँ मिल रही है, अच्छा ये अच्छी है। मोर लेस ऐसा नहीं होता मेरा ख्याल है, Okay. क्योंकि अब ब्रांडिंग
जितनी भी चीजों की है ना, अब लाइक मिसाल के तौर पे सलमान खान की हम बात करें तो उसका जो ब्रांड बीइंग ह्यूमन है वो इस वजह हाँ, से स्टार्ट हुआ है क्योंकि वो उसने अनह्यूमन काम किए हुए हैं। उसने बेचारे बंदों को ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी, डियर मार दिए थे, उसके आई बाद वो स्टार्ट की, यू नो। तो पीपल हु आर लाइक बिग फैंस लाइक मी ऑफ सलमान खान, अब मैं उसको इतना बड़ा फैन नहीं हूँ। अब अगर वो कुछ भी करता है तो मैं कहता हूँ नहीं, ये इसके पीछे जरूर कोई गेम है, यू समझ नो। गया, तो समझ गया। आई अच्छी बात है अगर ऐसा हो जाए, ब्रांड्स आए और ब्रांड्स स्टार्स में इन्वेस्ट करें। देखिए लेकिन मैं आपको अश्योर कर दूं कि अली सफीना जो भी ब्रांड के साथ कोलैबोरेट होगा, मैक फ्लॉक्स हो या मसरूर चीदा हो, वो डेफिनेटली अली सफीना के साथ और उसके ब्रांड्स को जरूर प्रमोट और कनेक्ट करके जरूर खरीदेगा। जबरदस्त। तो है ना, कीप एन आई आउट एंड देखिए कि मैं किधर किधर क्या क्या कर रहा वो डेफिनेटली अब आपको पीछे लग जाना है, मैंने जासूस बन के आपके पीछे लग जाना है। हूँ। So mashallah, you and Hira, your wife, mashallah, you both are the brand ambassadors of Daraz Mall as well, Daraz Mall के। या तो आप लोगों का क्या रोल है? आप उसमें किस तरीके से लोगों को प्रमोट करके बोलते हो यार दराज मॉल पे आ जाओ और ये चीज खरीदना है, किस तरीके से करते हो आप? well, to be honest, we were hired for the campaign, ठीक है, हम्म, to be like they wanted to hire a real life couple, हम्म, uh, और आमतौर पे रियल लाइफ कपल, खासतौर पे कोरोना के दिनों में, हम्म, ये घर के अंदर आई एम श्योर एक बहस चल रही थी कि हम्म, खातन कह रही थी कि यार मुझे तो फलानी चीज तो चाहिए ही चाहिए, और जो शौहर थे वो कह रहे थे कि यार अगर चाहिए तो देख के मंगवा लेना, ऑनलाइन देखते आप देखते कुछ हो आता कुछ है, ये भी है। और समथिंग। कोविड में बाहर जा भी नहीं सकते। तो ब्रांड ने कुछ अच्छा सोचा, दराज ने हम्म, कुछ अच्छा सोचा, उन्होंने हम्म, फिर हमें हायर किया। उन्होंने कहा यार ये 3-4 फिल्में या आप हम लोगों के साथ करें, एंड आई थिंक इसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। वो हमने कर दी और रिस्पॉन्स वाकई बहुत अच्छा आ गया। एंड बेशक। लाइक यू नो कि वाकई यार दराज तो वाकई जबरदस्त है। अब इसका मतलब है मैं अपने तमाम घर वालों को बोलता हूँ कि अली ने और हिरा ने दराज से बहुत शॉपिंग की, हमने भी वही करना है। तो आ रहे हैं। Mashallah, mashallah. So Ali Safina, what message would you like to give to all the people out there before we wrap this wonderful session of ours today? क्या मैसेज आप देना चाहेंगे ऑडियंस और फॉलोअर्स दुनिया भर में? ये मेरा मैसेज सिर्फ ये है कि अपने रब को याद रखें, और हर टाइम पे, और जितने लोग कोई मुसीबत में है, कोई अगर उदास है, किसी को कुछ दे दें स्माइल दें उनको आप चेहरे पे। बेशक स्माइल से कुछ ज्यादा बढ़ जाए ना भाई। अब स्माइल से बिल्कुल। क्या होता है, किसी का पेट तो नहीं भरता, स्माइल से किसी का गम तो नहीं भुलाता। स्माइल तो ये आपका अपना अच्छापना जो है ना वो आप जाहिर करते हो कि आप कितने अच्छे हो। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल और सही। जब तक किसी दूसरे को कोई फायदा नहीं हो रहा, तब तक मेरा ख्याल है कि आपकी स्माइल बेमानी, यू नो, तब तक आपकी स्माइल जो है ना वो ये है कि आप मेरी मिजरी पे मुस्कुरा रहे हो। क्या अब ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, क्या अली सफीना मैकलॉक्स के ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहेंगे? बिल्कुल मैं हूँ, आज से मैं आपका ब्रांड एम्बेसडर हूँ, बेफिक्र हो। दैट वुड बी वंडरफुल। तो इसके लिए आपकी छोटी सी मदद मुझे ये चाहिए होगा कि आपकी तरफ से एक शाउट आउट आ जाए मेरे तमाम फॉलोअर्स के लिए, अंग्रेजी में और उर्दू में दोनों, कि बिल्कुल अली सफीना इज प्रमोटिंग मैकलॉक्स एंड ही वुड बी अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर मैकलॉक्स। बिल्कुल ठीक है, डन हो गो गया। हेड, गो हेड जी। एंड जस्ट से अ स्मॉल Oh, मैसेज फॉर मैकलॉक्स। you want me to record it right now? या Okay, guys. Hey, guys, this is Alisafina. So please subscribe to Mac Vlogs and make sure you follow Mac Vlogs and also me because I am his brand ambassador. थैंक यू सो मच, इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी। अब Thank आपने you. क्या करना है, आपने अब तमाम, आपकी तो फॉलोइंग माशाल्लाह बहुत ह्यूज है। अब आपने मुझे मेरे चैनल को सक्सीड करने, क्योंकि अब आप बन चुके हैं, हमारा हो गया है कोलैबोरेशन एज अ ब्रांड, तो आपने मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स के लिए और व्यूइंग के लिए Don't worry. एक, I'll you will help me out for sure. yeah, sure, sure, sure. Everyone, now Ali Safina and MacVlogs are together and they are going to be coming up with more concepts, more different ideas now for different shows. I think हम दोनों अब एक शो करने वाले हैं एक साथ I इंशाल्लाह। think why not? If the I'm time permits, why not? I'm going to think of a great concept and theme which where you and I can host together. Basically, you are a wonderful host. आपसे सीखने मिलेगा, मैं आपसे सीनियर हूँ या आप मेरे से जूनियर, it doesn't matter. When you're on a platform, everyone becomes equal, Yeah, right? absolutely.
Absolutely. Thank you for your wonderful time. I wish you all the best in success and happiness with you, your wife Hira, and your little daughter. तमाम Thank you very खुशियां अल्लाह आपको कामयाब करे हर चीज़ में इसी तरीके से हंसते रहें और हमेशा लोगों को खुशियां भी बांटें और जोड़ते रहें और कामयाब रहें. Thank you once much. again. Thank you. Thank you. Also, Pakistan. don't forget to subscribe, share, and like Mac Vlog. So this is for the today. Before I wrap up, okay, shukriya to my great guest Ali Safina Saab. Thank you once again. Thank you very much. Bye bye. Take care, ji. Assalamu alaikum.